गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक ले रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो एमसीक्यू डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस द मियोसिस अकर्स इन, यानी मियोसिस कहाँ पर होता है देख सकते हैं आप यहाँ पर। देखिए द ऑप्शंस आर एंडोथीसियम, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर टेट्राड एंड द पोलन ग्रेन. And the answer is microspore mother cell. Here the meiosis occurs. The question number 2 is starting from the innermost part, the correct sequence of the parts in the ovule are: number 1, egg, nucellus, embryo sac, integument. Number B, egg, embryo sac, nucellus, integument. Number C, embryo sac, nucellus, integument and egg. Number D, egg, integument, embryo sac and nucellus. So the right answer is egg, embryo sac, nucellus and then the integuments. Right? The option right one is a B. Answer is the right one. Third question is flowers with both androecium and gynoecium are: number first is bisexual flowers, number 2 is anther, number C is stamens and number 4 unisexual flowers. So the answer bisexual flowers. The answer is bisexual flowers. A answer is right answer. Fourth question is generative nucleus divides to form 2 male nuclei, 3 male nuclei, 2 female nuclei and third and last one is 3 female nuclei. So the right option is 2 male nuclei. Next question is fifth question. The functional megaspore in the flowering plant develops into, किस में develop होगा? Functional megaspore in the flowering plants: endospore, ovule, embryo sac and last is D option, embryo. So the answer is embryo sac. C is a right answer. Functional megaspore किस में डेवलप हो जाता है? एम्ब्रियो सेक में. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फिलीफॉर्म अपरेटस? फिलीफॉर्म अपरेटस का क्या फंक्शन है? नंबर ए, guide the entry of the pollen tube. Number B, recognize the suitable pollen at the stigma. Number C, produce the nectar and number D, stimulate division of the generative cell. The right option is filiform apparatus का function क्या होता है? To guide the entry of the pollen tube. To guide the entry of the pollen tube. So the pollen tube entered into the filiform by the filiform apparatus. It enters into the egg cell. It guide that it will not enter into the synergid cell. Question number 7. Which of the following fruit is produced by parthenocarpy? इनमें से कौन सा जो फ्रूट है वो पार्थिनोकार्पी से डेवलप होगा? पार्थिनोकार्पी पता ही है आपको. व्हाट इज दिस? इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ द फ्रूट विदाउट द फर्टिलाइजेशन. तो ऑप्शन इज ए इज़ अ ब्रिंजल, बी इज़ अ एप्पल, सी इज़ बनाना एंड लास्ट वन इज़ अ जैक फ्रूट. द राइट आंसर इज सी, दैट इज कॉल्ड द बनाना. C is the right option. Question number 8. The process of formation of the seeds without fertilization in the flowering plant is known as, without fertilization, formation of the seeds, but here is the formation of the seed. Number A is the budding, number 2 is the apomixis, number C is the sporulation and number D is the somatic hybridization. The right option is apomixis. B is the right answer. Question number 9. Rewards and attractants are required for: number 1, entomophily, number 2, cleistogamy, number 3, anemophily and number D is hydrophily. The right answer is entomophily. It is a pollination by the insects. Question number 10. Flowers which have the single ovule in the ovary and are packed into inflorescences are usually pollinated by, ठीक है, usually pollinated by water, bee, wind and bat. The right option is C. It is called the wind. ठीक है, जो पैक्ड होते हैं ओवरी, दैट इज़ अ
have the single ovule in the ovary and packed into the inflorescences, yani mostly it is a packed. Question number 11. Are dioecious flowering plants prevents both autogamy, xenogamy. Second option is autogamy, geitonogamy. C is geitonogamy and cleistogamy, and D is none of these. Question number 11. The right option is dioecious flower that prevents both. It is a autogamy and geitonogamy. Got it? Question number 12. The female gametophyte of the typical dicot at the time of fertilization is 8 cell, 7 cell, 6 cell, and 5 cells. The right answer is 7 cell. Question number 13. Both the chasmogamous and clistogamous flowers present in Helianthus, Commalina, Rosa, and Gossypium. The right answer is obviously it is the B answer, Commalina. Question number 14th. The feathery stigma occurs in. Feathery stigma किस पे होती है? P. Datura, wheat, Caspelmia. The right answer is Datura. Which of the following is not the water pollinated plant? कौन सा इनमें से water pollinated plant नहीं है? Jostera, Vallisneria, Hydrilla, Cannabis. The right answer is Cannabis. ठीक है? Next question is spiny-sticky pollen grain and large attractively colored flowers are associated with A. Hydrophily, number B. Entomophily, number C. Ornithophily, number D. Anemophily. The right answer is entomophily. B option is a right option. Question number 17. Endospermic seeds are found in. Endospermic जो seeds होते हैं that is found in castor, barley, coconut and all of these. The right answer is all of these. Question number 18th. In the albuminous seeds, fruit is stored in the non-albuminous seeds. It is stored in number A. Endosperm cotyledons, number B. Cotyledons endosperm, number C. Nucellus cotyledons, number D. Endosperm radicle. The right answer is albuminous seeds. Stored in non-albuminous seed, it is stored endosperm and cotyledons. ठीक है? So right answer is A option is right answer. 19th question. Persistent nucellus is called as and it is found in. Persistent nucleus को क्या कहते हैं? A. Perisperm, black pepper, perisperm groundnut. C is endosperm, black pepper, and D is the endosperm groundnut. The answer is right answer is A. Perisperm, black pepper. ठीक है? पॉलीएम्ब्रियोनी कहाँ पर होती है? बनाना में, टोमेटो में, सिट्रस फ्रूट में या फिर पोटैटो में. पॉलीएम्ब्रियोनी जिसमें बहुत सारे इस तरह से एम्ब्रियोज होते हैं. पॉलीएम्ब्रियोनी सिट्रस फ्रूट्स में, ऑरेंजेस एक्सेट्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th क्वेश्चन पे आ गए हम. 20th हो गया. 21. द आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट वॉल लेयर्स ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम इन द anther are respectively number A. Endothecium tapetum, number B. Epidermis endodermis, number C. Epidermis middle layer, and D is epidermis and tapetum. Question number 21. The right answer is outermost layer कौन सी होती है? Epidermis. और innermost wall कौन सी होती है? Tapetum. So the right answer is D option is right option. 22 question. Non-essential floral organs in the flowers are sepals, petals, anther, ovary, stigma and filament, petals only. नॉन एसेंशियल फ्लावर कौन से होते हैं जो नॉन एसेंशियल होते हैं? ऑब्वियसली इट इज़ अ ए ऑप्शन, सेपल्स एंड पेटल्स. नेक्स्ट. द स्टेमन रिप्रेजेंट. स्टेमन क्या रिप्रेजेंट करती है? माइक्रोस्पोरेंजिया को, मेल गैमेटोफाइट को, मेल गैमेट्स को, या फिर माइक्रोस्पोरोफिल्स को. 23rd क्वेश्चन. इट इज़ द स्टेमन रिप्रेजेंट करती है माइक्रोस्पोरोफिल्स को. आंसर इज डी. 24th question number 24th. Anther is generally monosporangiate, bisporangiate, tetrasporangiate and trisporangiate. 24th question. The right answer is tetrasporangiate. 25th question. The innermost layer of the anther is tapetum whose function is. इसका फंक्शन क्या है? डिशेंस, मैकेनिकल, न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन.
तो आंसर है इसका हुज फंक्शन इज न्यूट्रिशन। द राइट आंसर क्या है? न्यूट्रिशन। स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड माइक्रोलॉजी, एंथोलॉजी, पैलियोनोलॉजी, पोमोलॉजी। तो 26 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? पैलियोनोलॉजी। पॉलन ग्रेन की स्टडी को क्या कहते हैं? पैलियोनोलॉजी। नेक्स्ट, if the endosperm cell of the angiosperm contain 24 chromosome and number of chromosome in each cell of the root will be 8, 4, 16, 24। तो राइट आंसर क्या है इसका? सी 16। ठीक है, क्योंकि एंडोस्पर्म सेल है, अगर एंडोस्पर्म सेल है तो यहाँ ये कह रहा है कि 24 है इसमें क्रोमोसोम्स। ठीक है, 24 है, एंडोस्पर्म है तो 3n हो गया, 24 डिवाइड बाय 3 हो गया तो क्या आ गया? 8। अब ये कह रहा है कि क्रोमोसोम नंबर इन द सेल्स ऑफ रूट, तो 8 2 ज़ा 16, तो राइट आंसर क्या हो गया इसका? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेल्स ऑफ द एंडोस्पर्म हैव द 24 क्रोमोसोम, व्हाट विल बी द क्रोमोसोम इन द गैमेट्स? 24 क्रोमोसोम एंडोस्पर्म में, बिल्कुल ठीक। देखिए फटाफट बताइए, 8, 16, 23 एंड 32 गैमेट्स में है, फटाफट बताइए। इट इज़ 8 इन नंबर। ठीक है, वही 3n इज इक्वल टू 24 एंड n इज इक्वल टू 8। द ट्रू एम्ब्रियो डेवलप्स एज अ रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ। ट्रू एम्ब्रियो कब बनता है? कैसे बनेगा ट्रू एम्ब्रियो? 2 पोलर न्यूक्लियाई ऑफ द एम्ब्रियो सेक, एग सेल एंड मेल गैमेट्स, सिनर्जिड एंड मेल गैमेट एंड एंटीपोडल सेल। द राइट आंसर इज एग सेल एंड मेल गैमेट। ठीक है, फ्यूजन ऑफ egg cell and male gametes. Number 30 question. The portion of embryonal axis between plumule and cotyledon is called hypocotyle, epicotyle, coleorhiza and cleopatyle. 38 question. The answer is epicotyle. ठीक है, epicotyle is a right answer. 31 question. डैश इज नॉट एन एंडोस्पर्मिक सीड, इनमें से कौन सा एंडोस्पर्मिक सीड नहीं है? पी, मेज, कैस्टर एंड वीट। देख के बताइए फटाफट। द आंसर इज ए, पी। 32 क्वेश्चन। एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो इन पी ग्राउंडनट, मेज, कैस्टर, सी इज कैस्टर ग्राउंडनट, डी इज मेज एंड पी। एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम किस में हो जाता है? राइट आंसर इज पी एंड ग्राउंडनट, ए इज राइट आंसर। Next question is how many pollen mother cells should undergo meiotic division to produce 64 pollen grain? कितने pollen जो mother cells हैं that undergo meiotic division to produce a 64 pollen grain? तो 33 का आंसर है 64, 32, 16 and 8. The right answer is 16. ठीक है, 16 is the right answer. 34th question. How many meiotic cell division are required for the formation of the 100 pollen grains? बनाने के लिए कितने meiotic division चाहिए? 100, 50, 25 and 26. तो आंसर कितना आ जाएगा? meiotic division है, C is the right answer, 25. Next question is one of the most resistant biological material present in the exine of the pollen grain is sporopollenin, pactocellulose, suberin and D is cellulose. So right answer is sporopollenin. क्या आ गया इसका आंसर? sporopollenin. 36 क्वेश्चन. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जंप पोर? जंप पोर का क्या मतलब कि फंक्शन होता है? इमर्जेंस ऑफ रेडिकल, absorption of the water for the seed germination, initiation of the pollen tube and D is all of these. 36 question. It is the initiation of the pollen tube. ठीक है, next question is dash of the pollen grain divides to form 2 male gametes. ठीक है, dash of the pollen grain divides to form the 2 male gamete. Vegetative cell, generative cell, microspore mother cell and none of these. 37th का आंसर generative cell. ठीक है, आंसर क्या आ गया इसका? generative cell. The 3 cells found in fully developed male gametophytes are 1 vegetative, 1 generative, 1 male. 1 vegetative, 2 male gametes, 1 generative, 2 male gametes, either A or B. Question number 38. The right answer is B, 1 vegetative, 2 male gametes. ठीक है,
1 vegetative cell, 2 male gametes. Next question. Megasporangium along with its protective integument is called ovary, ovule, funicle, chalaja. Ovary, ovule, funicle, chalaja. Ovule. Pollen kit is generally found in anemophilous flower, entomophilous flower, ornithophilous flower, मैकेलोफिलस फ्लावर. बी एंटोमोफिलस फ्लावर. ठीक है, पॉलन किट किस में होती है? एंटोमोफिलस फ्लावर्स के अंदर. द पार्ट ऑफ गाइनीशियम दैट डिटरमाइन द कॉम्पेटिबल नेचर ऑफ द पॉलन इज. कॉम्पेटिबल नेचर किस में होता है पॉलन ग्रेन में? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड सिनर्जिड. किस में होगा? द राइट आंसर इज स्टाइल. जो मतलब एक पार्ट है दैट इज कंपेटिबल, पॉलन ग्रेन के इक्वल कह सकते हैं, तो इट इज अ स्टाइल. B is the right answer. 42nd question. Growth of the pollen towards the embryo sac is chemotropic, thigmotaxic या thigmotropic, geotropic and none of these. 42nd question. The chemotropic is the right answer. During the process of the fertilization, the pollen tube of the pollen grain usually enters the embryo sac through इंटीगमेंट, न्यूसेलस, चलेजा या माइक्रोपाइल. कौन सी उससे पार्ट से ये एंटर करेगा? इट इज़ द पार्ट विच इज़ कॉल्ड द एंटर्स फ्रॉम द एम्ब्रियो सेक थ्रू. एम्ब्रियो सेक में तो न्यूसेलस से एंटर करेगा ये. ठीक है, तो न्यूसेलस इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल नंबर ऑफ द न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन द डबल फर्टिलाइजेशन इन द एंजियोस्पर्म आर 2, 3, 4 and 5. 44th. It is the right answer is total number of nuclei is a 5. 5 is the right answer. Apple is which type of the fruit? It is a false fruit, true fruit, parthenocarpic या फिर एपिमिक्टिक. It is a false fruit. ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया? 45 का B is the right answer. यक्का प्लांट इज पॉलिनेटेड बाय. यक्का का प्लांट किससे पॉलिनेटेड होता है? बर्ड से, वाटर से, मॉथ से या फिर विंड से? द राइट आंसर इज सी, दैट इज कॉल्ड द मॉथ. मॉथ से पॉलिनेटेड होता है. मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द एडिएबल पार्ट ऑफ कोकोनट इज कॉटिलिडन, एंडोस्पर्म, पेरिस्पर्म, पेरिकार्प. तो राइट आंसर इज एंडोस्पर्म. ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ एडिएबल पार्ट ऑफ कोकोनट. नेक्स्ट 48th क्वेश्चन. रिमूवल ऑफ द एंथर्स फ्रॉम द फीमेल फ्लावर इन द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. बैगिंग, emasculation, rebagging, none of these. 48 का B, it is called the emasculation, removal of the anthers. Process of seeds without fertilization is called parthenogenesis, hybridization, emasculation, apomixis. The right answer is apomixis, production of the seeds without fertilization. Corn cob tarsals are made up of anther, style of stigma, stipules, none of these. The right answer is style of stigma. ठीक है, स्टाइल ऑफ स्टिग्मा से बनी होती है जो कॉर्न कॉब्स होती है. सो यहाँ तक हमने MCQs कंप्लीट किए. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए. सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.